हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 4 ऑफ माय ऑफ सीजन ट्रेनिंग। आज हमारे प्रोग्राम में सिर्फ मोबिलिटी है और मोबिलिटी का जो प्रोग्राम है वो हमें हमारी फिजियो करवाती है। हर नेम इज़ भाग्यश्री मैम। सो आई एम गोइंग टू गिव द कैमरा टू हर एंड शी विल रिकॉर्ड ऑल दी एक्सरसाइजेज और वो ये भी बताती रहेंगी कि कैसे वो करनी है। So that's her and now she will tell all the exercises। बीच बीच में वो ये भी बताएंगे कि हमें मोबिलिटी क्यों करनी चाहिए। ओके मैम। तो ये जो मोबिलिटी सेशन है इसके अंदर मैं जल्दी जल्दी एक्सरसाइजेस करूँगी, बट यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि हर एक्सरसाइज को 30 सेकेंड्स होल्ड करना है और फिर दूसरे साइड भी सेम 30 सेकेंड्स होल्ड करना है। तो मैं हर एक्सरसाइज को दोनों तरफ कर रही हूँ, बट आई एम होल्डिंग ओनली फॉर 2 to 3 सेकेंड्स ताकि मैं इस पूरी वीडियो में सारी एक्सरसाइजेस कवर कर सकूँ। तो आप पॉज कर करके पहले एक एक्सरसाइज देख लेना, उसको 30 सेकेंड होल्ड करना, दूसरी साइड होल्ड करना, फिर प्ले करके ऐसे करके पूरा मोबिलिटी सेशन इस वीडियो के थ्रू कर सकते हो। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप एक वीक में एटलीस्ट एक बार ये सारी एक्सरसाइजेस करो क्योंकि मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका रेंज ऑफ मोशन इससे बढ़ेगा, कोई भी स्टिफनेस है, टाइटनेस है, वो रिलैक्स होएगी और ये एक एक्टिव रिकवरी के जैसा है। तो जिस दिन समझ लो वेंसडे है, सो टुडे इज वेंसडे, इट्स अ रेस्ट टुडे। वेंसडे को मॉर्निंग में मोबिलिटी सेशन होता है और फिर रिकवरी सेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल आइस बाथ, मसाज या कुछ भी। सो मोबिलिटी सेशन पूरा इस वीडियो में मैंने डाला है जो आप भी साथ साथ में कर सकते हो। एंड लेट्स स्टार्ट द वर्कआउट। As we said, mobility is very important to maintain a good range of motion, and stretching also helps with recovery. And we're also going to do a little relaxation at the end of the mobility session. It will help you recover well, as today is your rest day. So let's start with the first exercise, which is a shoulder stretch for the pectoral muscle. So you keep your shoulder hands at your shoulder level on the wall. Okay, stretch your body away from the shoulder and relax your neck. Hold the stretch for good 30 seconds. Relax. Repeat the same on the other side. Yes. Neck should be relaxed, body straight. Relax. Yeah. Now the next stretch will be hands up at the head level. This is to stretch the pectoralis muscle. Hand should be further up and the elbow should be straight. Again the neck remains relaxed. Stretch and hold for 30 seconds and then change side. Neck relaxed, look straight. Feel the stretch in pectorals. Do not overstretch. Stretch only as per your comfort. It should be pain free. Okay, relax. Next stretch is a calf stretch. So for this you can support your calf onto any surface, either a wall or a stool. Basically you need to place your toes on the wall, stretch your body, shift your body weight front from back leg to front leg, and then stretch and hold this for 30 seconds. Relax and then repeat the same on the other side. Next stretch is our quadricep stretch. So we hold one hand onto the wall or support, hold your ankle, hold the other hand on the ankle, pull your leg back, bend your knee, pull your leg back. Body should remain straight, do not bend forward. Stretch and hold, pull your knee back further, Kachnar. That's it, body straight. And we repeat the same on the other side. Hold your ankle, bend your knee nicely, pull your hips back. Come on, legs back, body straight, hold and relax. After this we have IT band stretch, which is IT band stretch. So you take one leg behind the other. Now try to touch both your hands to the back leg and hold. Feel the stretch in the IT band. Hold that for good 30 seconds. Make sure your foot is flat on the floor and you're balancing well. If you cannot balance, stand next to the wall and try to take support and do the same. Both hands touching the back foot. Hold for 30 seconds, relax, up. Next we have ankle mobility against the
window frame or stool, anything that you're comfortable with based on your range. Okay, keep one foot up, keep the back foot a little closer and relaxed. Now shift your body weight front and back so that there is movement happening at the ankle joint. We do 10 movements, and at the 10th rep we hold the stretch there for 10 seconds. Relax and then repeat the same on the other side. Okay, after this we have ankle mobility in squat position. So we do a full squat, go down as much as possible. Try to keep your heel on the floor all the time. Heel should not lift. Now move from side to side, feeling good movement in the ankle, making sure your heels do not lift. After 10 repetitions in this direction, now you move front and back, making sure again the heel does not lift up. Yeah, and then up. Okay, after this we have hip mobility series. So for this you'll have to sit with back support. Now bend both your knees, keep a little distance, bend it further nicely. Now our goal will be to touch one knee to opposite ankle and keep moving without lifting the back off. Go back, keep your back supported, move 10 times, and then we hold at the 10th rep for 10 seconds. Relax, switch side, hold and relax. After this, single sided hip mobility, one leg. So one leg straight, other leg on the side, bend it nicely, keep the arm across your body so it doesn't come in the way. Now move front and back. Again, make sure your back is supported and the leg moves in both directions, not just down, also back. Okay, after 10 movements you hold it in each position for 10 seconds and then the other position for 10 seconds, then change leg. Relax. Okay, in full body stretch we need you to bend one knee, keep one knee straight, slide from your hips, keeping your head and shoulders relaxed. Now the funda is breathe in while coming up, breathe out while going down, and as much as possible keep your neck and shoulders relaxed. Do it slowly without any jerk. While going back and trying to touch your forehead, you can bend your elbows but make sure the leg does not lift. Okay, do 10 on each side. This and then hold for 10 seconds in each direction. Yeah. Yes. With butterfly stretch mein, you have to keep your heels close to your groin as much as possible. Back सीधा रहेगा. Okay, अब hip का full range use करके move करो up and down 10 times, and after that hold the stretch, like hold your legs down there for 30 seconds. If comfortable, bend down. If not, just stay where you are and hold the stretch. Okay, once this is done, relax. Once this is done, we do frog stretch. Yeah, so in frog stretch you're basically stretching your groin. Okay, try to keep your body straight, look up, hold for 30 seconds and then relax. Next up we have pigeon stretch. So in this we keep the front leg bent, back leg will be straight, body will be straight, and we hold the stretch for about 30 seconds, relax, and then we change side. Hold and relax. Cat camel. Yeah, we do this. Remember, only your spine will move, the neck will not move, and feel full range in the back. Upper back as well as lower back. Full range. Take it up and down completely.
After this, you hold it for 10 seconds in both directions and then relax. Then we do upper back mobility. In this, you have to slide one arm down as much as you can and then slide it up in the other direction. This is called threading the needle and it is very good for your upper back. Remember, no jerks. Go as slow as possible and use full range that you have. Do 10 each side and at the end hold it for 10 seconds. Okay, relax. After this we go to child's pose stretch. Child's pose stretch, इसमें बटक को नीचे हील पे टच करना है. हेड, नेक एंड शोल्डर्स रिलैक्स रहेगा. इस पोजीशन में करीब 10 to 20 सेकेंड्स होल्ड करना है. फिर दोनों हाथों को राइट साइड पे लेके जाना है. अगेन होल्ड दिस पोजीशन फॉर 10 seconds. Slowly come to center. Take your hands to the left. Hold this position for 10 seconds. Come to center. Remember, ये करते वक्त नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहना है. ब्रेथ होल्ड नहीं करना है. कम अप. Once this is done, then we do our sitting stretches. अब दोनों साथ में रखें. एंकल को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है. दोनों एंकल्स को आगे की तरफ स्ट्रेच करके 10 सेकेंड्स होल्ड. फिर दोनों अपनी तरफ स्ट्रेच करके 10 सेकेंड्स होल्ड करना है. अब स्ट्रेच फील करके फुल रोटेशन करना है. 5 times क्लॉकवाइज, 5 times एंटी क्लॉकवाइज. ऑलराइट. ये होने के बाद हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच. सो दोनों पैर साथ में है. हिप से स्लाइड करना है. हेड एंड नेक रिलैक्स. जहाँ तक रीच कर सकते हैं फाइन. स्ट्रेच एंड होल्ड. नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहना है. 30 सेकेंड्स तक ये होल्ड करना है एंड देन रिलैक्स. Okay, once this is done, spread your legs apart. Adductor stretch. Okay, keep your hands on the floor. Keep your hands on the floor. Keep your neck and shoulders relaxed, Kashnar. And now slide your hands front as much as you possible as per your comfort. Feel stretch in adductors. Hold. Toes pointing up. Stretch 30 seconds. Hold. Relax. Once this is done, touch both your hands to right foot. Hold for 30 seconds. Relax. Make sure your knee is straight and you're doing normal breathing. Knee bend नहीं करना है. Normal breathing करते रहना है. Relax. Once ये हो गया, उसके बाद we do sitting stretches. तो now sit normally with your legs bent. पालती डाल के बैठना है. Stretch your hands up. Look up to the ceiling, chin up. Hold the stretch for 10 seconds. Relax, look down. After this, keep your fingers interlocked. Twist your body to the right. Stretch and hold for 10 seconds. Come to the center. Stretch and hold on the other side. Come to the center and relax. After this, you rotate your body to the right. Take both your hands to the right. Look back. Neck will be back. Hold the stretch for 10 seconds and relax. The other side, hold it for 10 seconds and relax. Next stretch, दोनों हाथों को पीछे लेके जाइए. राइट रिस्ट को लेफ्ट रिस्ट से पकड़िए. शोल्डर्स को पीछे पुल करना है. कचनार पुल योर स्कैपुला बैक और हाथ ऊपर उठाना है. स्ट्रेच अप and hold this position for good 10 to 15 seconds and relax. Then repeat the same. दूसरा wrist पकड़ के again hold up and relax. Next, stretch and hold for 10 seconds. Relax. Repeat the same on the other side and then relax. Next, right hand को right scapula पे रखो पीछे. अब elbow को पीछे की तरफ खींचना है. neck सीधा देखना है. Relax. कंधा relax. 30 seconds hold. Relax. Look up straight. Okay. After this, neck stretch. The right ear to right shoulder. Pull with your hand. Stretch and hold for 30 seconds. Relax. Repeat the same on the other side. Make sure your back is straight and do not overstretch.
Next stretch is left hand back. Look at your right armpit. Hold your hands behind your head. Stretch and hold. Relax, change, stretch and hold. Okay, next after this we have back stretches. So you lie on your tummy. Keep your head relaxed to one side. दोनों shoulders side में रहेंगे. Make sure पैरों को मूव करने के लिए जगह है. अब राइट फुट को लेफ्ट हैंड पे टच करना है, पर शोल्डर्स ज़मीन पे रहेंगे. जितना हो सके उतना शोल्डर्स ना उठे, कोशिश करो ना उठे. एंड बैक में स्ट्रेच फील करना है. जर्क नहीं देना है, बिल्कुल आराम आराम से करते रहना. ओके, 10 times each side and then 10 second hold in the end. आफ्टर दिस टेक अ 5-10 सेकेंड ब्रेक. फिर दोनों हाथों को शोल्डर के नीचे लाइए. कोबरा पोज में आना है. लुक अप. शोल्डर्स को नीचे और पीछे पुश करना है. रिलैक्स. पुल योर शोल्डर्स बैक. चिनार. लुक स्ट्रेट. मेंटेन द स्ट्रेच. रिलैक्स. स्टे देयर फॉर फ्यू सेकेंड्स. फिर अपने पीठ पे लेटना है, सीधा लेटना है. These are back stretches. Okay, पहला दोनों नीज को अपने चेस्ट के पास लो. 30 सेकेंड तक होल्ड करना है. अगेन नॉर्मल ब्रीदिंग एंड देन रिलैक्स. नेक्स्ट दोनों नीज बेंड रख के एक को क्रॉस करो दूसरे पे. ट्विस्ट योर बॉडी टू वन साइड. शोल्डर नहीं उठना चाहिए. होल्ड फॉर 20 सेकेंड्स. रिलैक्स. चेंज साइड. Hold for 20 seconds. Come to center and relax. The third stretch is make a 4 with your leg. नीचे वाला थाई अपनी तरफ खींचो. ऊपर वाला नी बाहर की तरफ पुश करो. Shoulder and neck relax. Normal breathing. Hold 30 seconds. Relax. Change side. Hold 30 seconds and relax. यहाँ हमारा स्ट्रेचिंग ख़त्म हो जाता है. इसके बाद हम करते हैं रिलैक्सेशन सेशन, जो माइंड एंड बॉडी रिलैक्सेशन के लिए है. सो यू जस्ट क्लोज योर आइज, लाई डाउन. हाथ और पैर रिलैक्स कर दो. पूरा ध्यान अपने सांस पे लाना है. एंड देन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हर एक पार्ट को रिलैक्स करते रहेंगे. इसके बाद 10 मिनट्स का रिलैक्सेशन होता है. यू कैन फाइंड दैट ऑन यूट्यूब. आप खुद भी कर सकते हो. टिल रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड. दिस वॉज ऑल अबाउट day 4. सी यू ऑन day 5.